Welcome back to Chasing the Target. Rohit Sharma, Virat Kohli make the biggest comeback of the new year. Actually, अब year भी नहीं बोल सकते, new year हो गया rather के भाई. They are back in the T20 schemes of things. जबरदस्त न्यूज है नहीं है आगे मालूम होगा बट a lot of people अब एक्सपेक्ट कर चुके थे बिकॉज हार्दिक पांड्या इंजर्ड है. सूर्य कुमार यादव जो सेकंड कैप्टन थे, सेकंड इन लाइन वाले कैप्टन थे, उन्होंने इंजर हो गए. सो आई गेस इट वाज मोर लेस कमिंग. सबको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटर्न होगी. सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से ये आप देख सकते न्यूज को ले आए गए हैं. यूजुअली आपकी T20 की स्क्वाड या कोई भी इंडियन स्क्वाड अनाउंस हो जाती थी बट 4 दिन या 3 दिन रादर 11 तारीख को जो मैच है इंडिया अफगानिस्तान का. ध्रुव भाई हेलो, आप कैसे हैं? बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई 11 तारीख को मैच है, 3 दिन पहले आप टीम अनाउंस करे. एंड अगेन आई अंडरस्टैंड साउथ अफ्रीका का टूर हुआ, टाइम लगता है ये सब चीजों में, सोच विचार में. बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यूज क्रिकेट फो पे भी आ रही थी या कोई भी न्यूज आ रही थी, इट वाज ब्रेकिंग डाउन एंड कमिंग कि भाई पहले बताया गया कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा आर इन द टॉक्स एंड फिर विराट कोहली, शर्मा आर इन द स्क्वाड. तो देन यू कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोना बी इवेंचुअली हैपनिंग विद द टीम. एंड या क्लियरली we all understood later on कि भाई रोहित शर्मा विराट कोहली वापस आएंगे, रोहित शर्मा कैप्टन बनेंगे. बट अगेन डज रोहित शर्मा विराट कोहली, सॉरी रोहित शर्मा पर्टिकुलरली, विल ही बी द कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप? ये अभी क्लियर नहीं है बट यस डेफिनेटली इस न्यूज से या इस इंट्रो से डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि भाई रोहित शर्मा विल बी इन दैट T20 स्क्वाड टॉक्स 100%, 110%. अफगानिस्तान की टीम 2 दिन पहले अनाउंस हो गई थी, फ्राइडे को ही अनाउंस हो गई थी अफगानिस्तान की टीम. बट इंडिया की टीम ऑब्वियसली न्यूज बनाना था, थोड़ा बहुत चटपट मसाला. ऑलवेज इंडिया के फैंस आर ऑलवेज डाइंग टू नो कि भाई क्या होने वाला है टीम के साथ. पर्टिकुलरली जब सीनियर्स की बात आती है, रोहित शर्मा विराट कोहली की बात आती है, तो एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट्स गोना हैपन विद दीस गाइज. एंड या हियर इट इज, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस नाउ कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल बी प्लेइंग in the T20 tournament that is going to start on the 11th against Afghanistan. लॉट्स ऑफ प्लेयर जो साउथ अफ्रीका के टूर पे गए थे, जैसे कि ईशान किशन थे, केएल राहुल थे, सूर्य कुमार तो इंजर हो गए, बट काफी लोग लेफ्ट आउट भी हैं स्क्वाड के बाहर. सो दो की प्लेयर्स जो हम एक्सपेक्ट करे थे कि भाई व्हेन दिस विल हैपन. बट अगेन विल कम टू नो. ध्रुव भाई आई एम गुड, आप कैसे हैं? आप बोले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज ऑन दिस. यस, 9 जून में है, न्यूयॉर्क में है वो T20 वर्ल्ड कप. जितने भी इंडिया के मैचेस है सिवाय एक इंडिया कनाडा के मैच फ्लोरिडा में रहेगा, बाकी सब इंडिया का मैचेस वहां पे ही रहेंगे, न्यूयॉर्क में ही रहेंगे. सो या आई थिंक वीजा की प्रोसेसिंग अगर आप जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली शुरू कर दो बिकॉज इट्स गोना बी अ हेवी लाइन टू न्यूयॉर्क एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है. तो nonetheless, I mean, it will be a good experience to have in America अगर आप जा सके तो. yes. बट या तो यही है कि भाई डजंट डिटरमाइन द सिलेक्शन कि भाई रोहित शर्मा विल बी कैप्टन और नॉट. बट इंजरी की जो अपडेट थी हार्दिक पांड्या की, इट विल प्रोबेबली बी अराउंड the IPL. And IPL की बात करें तो the IPL starts around 21st March. You will be able to start watching the IPL and we'll come to know कि हार्दिक पांड्या की इंजरी सिचुएशन क्या है. सूर्य कुमार डेफिनेटली उतनी deep injury नहीं है सूर्य कुमार की when you compare it to Hardik Pandya. The सूर्य कुमार come back, become the captain of the World Cup 2020 squad. हमें अभी भी नहीं पता कि भाई कैप्टन कौन बनने वाला है. बट एक ये है कि भाई आप अगर साउथ अफ्रीका का टूर ले लो, उसमें ईशान किशन, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये प्लेयर्स है, श्रेयस अय्यर. अब ये टूर में श्रेयस अय्यर नहीं है, ये टूर में केएल राहुल नहीं है. ये अब आई थिंक या तो असेसमेंट करने वाले कोई साउथ अफ्रीका के टूर का, अफगानिस्तान के टूर का, फिर आपके maybe they might have another T20 set of matches that will be coming up after the IPL or just before the IPL. So maybe do you assess it there? Are you resting a few people for the England tour? अभी भी नहीं पता कि भाई क्या सीन है और क्या नहीं है. क्लियरली तो कुछ भी अभी पता नहीं है. बट यस, ये है कि भाई T20 के स्कीम ऑफ थिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी हो गई है. एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज फॉर अ फ्यू फैंस माइट बी सेइंग कि भाई बच्चों को चांस दो. थोड़े लोग बोले होंगे सीनियर को चांस दो. बट आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं आई थिंक करंट सिचुएशन ऑफ थिंग्स, आप एक सीनियर को लेके तो जाना जरूरी है. आई थिंक लेट इट बी रोहित शर्मा और विराट कोहली. विल डेफिनेटली हैव टू टेक वन ऑफ देम बिकॉज जीतना जरूरी है. अब मैं नो उनके साथ भी नहीं जीते, उनके बाद भी नहीं जीते, बट उनकी जो छत्र छाया, जो भी बोला आप, शैडो ऑफ रोहित शर्मा विराट कोहली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्क्वाड. You need to have guidance of the experienced players, and I think Rohit Sharma, Virat Kohli definitely will be very important for that squad. But अगर squads की अगर अपन बात करेंगे, for both Afghanistan and India quickly, we'll go through the squads के भाई क्या है.
बट अगेन शॉक अनाउंसमेंट नहीं रहा। अब आई थिंक कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर दिए थे कि यू माइट हैव सीन दिस कमिंग, बिकॉज पहले आप देखो सूर्य कुमार की इंजरी आई, जहाँ पे वो हार्ट ब्रेक का इमोजी आता है, फिर आपकी यू नो हार्दिक पांड्या की इंजरी ऑलरेडी वर्ल्ड कप से आ गई थी, एंड देन जब हमें ये खबर आई कि भाई आईपीएल तक शायद नहीं खेलें, देन आपका दिमाग वही हो गया कि भाई हाँ, एक ही बंदा है लीडर के यहाँ पे। अब शुभमन गिल की बात चल रही थी बीच में कि भाई शायद शुभमन गिल को कैप्टन बना दे, एंड अगर आप स्टार स्पोर्ट्स भी फॉलो कर रहे थे तो उनका एड पे द फ्रंट पेज पे इट वाज शुभमन गिल एंड क्या बोलते हैं अपने अफगानिस्तान के जो कैप्टन हैं इब्राहिम सदरान, तो उन लोगों की फोटो आ रही थी। इट वाज नॉट रोहित शर्मा, इट वाज नो वन। तो कहीं ना कहीं स्टार स्पोर्ट्स वाले भी बहक के शुभमन गिल की फोटो डाल दिए थे कि भाई शायद ये कप्तान बन जाए, बिकॉज रोहित शर्मा की कोई नामो निशानी नहीं था T20 स्क्वाड में, ना विराट कोहली का। बट फाइनली पर्दाफाश है एंड रोहित शर्मा विराट कोहली आर बैक। It's good to have them, obviously, experienced players, match winners, वगैरह वगैरह. But again, a lot of people will be sitting out जिनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी साउथ अफ्रीका में। अब ईशान किशन को नहीं लिया गया है, वो थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल सवाल है कि भाई ईशान किशन का क्या इशू है। मेंटली बोले थे कि मेंटल इश्यूज, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज थोड़े थे, हो रहे थे, उनके थक चुके थे, so शायद कंटिन्यूसली 6 मंथ फ्रॉम जून अंटिल दिसंबर 2023 वो टूर्स पे गए, वेस्ट इंडीज गए, एशिया कप गए, वर्ल्ड कप गए, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका भी जाके वापस आ गए। तो आई थिंक that's also a question कि भाई why Ishan Kishan will not pick for this series. Jitesh Sharma is the wicket keeping option that they have. Quickly just we'll run through these टीम के भाई की टीम्स हमारे को जो आए हुए हैं, जो अफगानिस्तान की स्क्वाड है, दिस इज व्हाट द स्क्वाड लुक्स लाइक राइट नाउ फॉर अफगानिस्तान। इब्राहिम जदरान विल बी द कैप्टन फॉर दैट स्क्वाड। देन you've got राशिद खान, ऑब्वियसली मैच विनर है, हम मालूम है कि भाई राशिद खान किस तरीके का खतरनाक बॉलर है। इब्राहिम अली खिल अगेन अ वेरी गुड बैट्समैन, गुलबदन नाइब वेरी हैंडी ऑलराउंडर है उनके पास। तो ऑब्वियसली इनकी तो कोर स्क्वाड ही है ये अफगानिस्तान की। दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ, दे नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस जिस तरीके से बोलते हैं इंडिया की टीम में। इंडिया की टीम में आपको इंडियन प्लेयर्स के सारे एक्सक्लूडेड प्लेयर्स के बारे में भी हम बताएंगे। भाई केएल राहुल ये सब मिस आउट हो गए, श्रेयस अय्यर, बड़े नाम है। अभी इन लोगों को आई एम प्रीटी श्योर इंग्लैंड का भी टूर है थोड़े ही हफ्तों में। यू गॉट 25 जून से 25 जनवरी से आपको इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच हैदराबाद में होगा। तो लाइव आपको यहाँ पे चेसिंग द टारगेट पे हम लोग लाइव स्टेडियम पे भी जाके रिव्यूज लेंगे, लोगों की बातचीत होंगी वहाँ पे। बट 25 जन से फर्स्ट टेस्ट शुरू होगा। सो इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि भाई आप T20 का फोकस तो रखना ही चाह रहे, बट ऑल्सो आप टेस्ट पे भी फोकस रखना चाह रहे, क्योंकि WTC साइकिल के लिए आपको पॉइंट्स जरूरी है बनाना। बट अगेन 5 टेस्ट है वहाँ पे। आपका दिमाग जाता है कि भाई ये टीम आखिर बनेगी कैसे, बिकॉज साउथ अफ्रीका में एक आधी टीम को लेकर गए थे। फिर आपके साउथ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका का जो T20 सीरीज था, और जो अभी अफगानिस्तान की T20 सीरीज होने वाली है, क्या उसमें से आप छाट करने वाले, क्या उसमें से आप चॉप एंड चेंज करके अपना अल्टीमेट वर्ल्ड कप टीम डालेंगे, या आप फिर आईपीएल को भी मद्देनजर रखेंगे, जो ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव ने बोला था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साउथ अफ्रीका में, हाँ आईपीएल भी रेडार पे रहेगा। तो you still don't have a clear sense of thought कि भाई क्या होने वाला है towards the World Cup T20 team for India. But again कहीं ना कहीं it is in the work in progress। तो दिख रहा है कि भाई एक हिस्सा खिला दिया साउथ अफ्रीका में, अब दूसरा हिस्सा खिला रहे हैं अफगानिस्तान के लिए। बिकॉज आई डोंट थिंक इसके बाद इंडिया की कोई सीरीज T20 की होगी या ओडीआई की, बिकॉज आपके पास इंग्लैंड का होगा, वो फरवरी मार्च तक चलेगा, वो मार्च तक चलेगा। उसके बाद आपका आईपीएल होगा। आईपीएल के बाद टाइम पे कोई भी मैच आपको खेलते हुए नहीं देखेंगे। सो लाइक सीरीज वाइज, तो आई थिंक दैट्स मोर और लेस कि भाई ये साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी T20 की, और अब जो अफगानिस्तान की सीरीज होने वाली है उसमें से ही छांट के करेंगे। अभी हार्दिक पांड्या की इंजरी की अपडेट नहीं है। अगर आईपीएल में हार्दिक पांड्या वापस आ गए और उनकी इंजरी की अपडेट हो गई, फिर डज दैट स्टिल चेंज द फैक्ट कि भाई विल ही कैप्टन द स्क्वाड, विल रोहित शर्मा कैप्टन द स्क्वाड? सो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क स्टिल दैट इज लिंगरिंग ऑन इंडिया सेट कि भाई कैप्टन बनेगा कौन? विल हार्दिक पांड्या प्ले? सूर्य कुमार की वापसी में विल सूर्य कुमार लीड द चार्ज? आई डोंट थिंक सूर्य कुमार विल बी लीडिंग द चार्ज, बिकॉज उनको एक ही सीरीज का एक्चुअली 2 सीरीज का अपॉर्चुनिटी मिला है। एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वर्ल्ड कप के था, और एक इमीडिएटली उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था। सो आई थिंक आई डोंट स्टिल सी सूर्य कुमार इन द रनिंग फॉर द कैप्टनसी, तो उनको साइड में रख के। बट अगर हार्दिक पांड्या की वापसी होगी, बिकॉज पूरा साल, पूरा 2023 T20 स्क्वाड को केयर टेक अगर कोई कर रहे थे इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहली रादर, आपके कौन अपने ये हार्दिक पांड्या आए थे। तो हार्दिक पांड्या की वापसी आईपीएल के बाद ही आई थिंक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उससे पहले तो वो दिखाई नहीं देंगे, इंग्लैंड के टेस्ट में भी आपको शायद नहीं दिखाई देंगे, और आईपीएल मिस होने की भी उनकी आवश्यकता है। सो
Coming to Afghanistan squad, more or less the same. We know what world beaters they are. T20 में बहुत opposition challenging है ये. कोई भी on their day किसी को भी हरा सकते. वर्ल्ड कप में भी 2023 50 ओवर फॉर्मेट में भी आप उनके रन देख सकते हैं कि जिस तरीके से दे बीटन अ लॉट ऑफ स्क्वाड्स. इंग्लैंड को हरा के पूरी दुनिया को शॉक कर दिए थे. बड़े बड़े टीमों को मार गिराया. पाकिस्तान को जो हरा दिए थे वर्ल्ड कप में. So in the 50 over format we saw their form rising, which makes them a very difficult opposition to play. And in the T20 world, तो उनका नाम तो पता ही है. राशिद खान IPL के one of the best bowlers है, proven bowler. फजल फारूकी a very good fast bowler. फरीद अहमद a very good bowler. नवीन उल हक के बारे में तो हमें मालूम ही है कि भाई he can bowl a very decent line and length. उसके बाद आपके पास मोहम्मद नबी है जो कैप्टन मटेरियल के साथ साथ एक्सपीरियंस थे. हजरत अल जाई एंड इब्राहिम जदरान themselves amazing batsmen. करीम जन्नत हैं जो ऑलराउंडर हैं but 140 भी डाल लेते. So they've got a very good squad. They've got good squad depth. And yeah, so I think in that aspect I would say कि भाई they're very good players. And Afghanistan स्पिन के भी प्रोबेबिलिटीज जिस तरीके से स्पिन ऑप्शंस उनके पास बहुत अच्छे हैं. नूर अहमद आग लगा दिया आईपीएल में लास्ट ईयर. चिंगारी लगा दी है. एंड जिस तरीके से लाइन एंड लेंथ और एक्यूरेसी है उनकी, इट मेक्स हिम अ फैंटास्टिक बॉलर एंड अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडियन बैट्समैन. विराट कोहली लेफ्ट आर्मर से यूजुअली ऑफ स्पिनर से थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं. उनके डिसमिसेस हो चुके हैं. तो या नूर अहमद वुड बी अ गुड attacker for him. And like we mentioned, Rashid Khan, they've got Mohammad Nabi. So they've got a very good squad. बहुत अच्छी squad है Afghanistan की for this T20, and it'll be a very challenging one. It's not going to be an easy as a walk in the park क्योंकि T20 ऐसा गेम है कि ये इन लोगों का strong front है अफगानिस्तान का. And I think फिर ODI आता है, फिर टेस्ट आता है, because टेस्ट बहुत कम ही खेले. बट ODI में भी रिसेंटली जिस तरीके से हम देखें उनके परफॉर्मेंसेस लाजवाब रह चुके हैं. इट्स बीन वेरी डिफरेंट अफगानिस्तान. उनका अप्रोच चेंज हो गया. जो जॉनसन ट्रॉट उनके कोच या जो मेंटर थे पूरे वर्ल्ड कप में, आई थिंक अफगानिस्तान का जो वो बोलते ना एंड में आके वो लोग मैच हार जाते थे इमोशंस की वजह से बोलो या दिमाग को शांत रखने नहीं पाते थे. बट नाउ रिसेंटली अगर आप देखो जिस तरीके से गेम्स फिनिश कर रहे, ऑपोजिशंस को टेल वाइप कर दे रहे, या बैटिंग के बैटिंग में दे आर नॉट लूजिंग विकेट्स अप फ्रंट अ लॉट. तो वो हिसाब से आई थिंक अफगानिस्तान हैव मच्योर्ड अप अ लॉट इन द रीसेंट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. मैच्योरिटी आ गई उनमें, थोड़ा फिनिशिंग आ गई, थोड़ी होल्डिंग द फोर्ट आ गया. इन केस अगर कोई हार गए तो जैसे अब रहमान गुरबाज पे बहुत डिपेंडेंसी थी एक टाइम तक, बट वो डिपेंडेंसी अभी आप थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते हुए देख रहे हो. रहमत शाह हैं, उमर जाई हैं, इकराम अली खिल हैं. दीज गाइस आर फैंटास्टिक. जो तरीके से आगे मिडिल ऑर्डर को होल्ड कर दे रहे हैं. एंड गुरबाज ऑब्वियसली अगर टॉप पे खेलना शुरू कर दिया तो नथिंग लाइक हिम. It'll be a very good start for Afghanistan, but now they can sort of handle the ship, steer it in the right direction, finish the games, kill the games. Rashid Khan, Noor Ahmad, for Fazal Haq Farooqi, Naveen ul Haq, पूरे fantastic players of cricket. And T20 again जैसे उनका strong frontier है वो दिख के आएगा. And it's not going to be an easy tour for India. विराट कोहली, रोहित शर्मा 2020 फॉर्मेट में आई वोंट से बहुत टाइम के बाद या तो बहुत टाइम के बाद आ रहे, बट एडजस्टिंग करने में उतना टाइम नहीं लगेगा. ऑब्वियसली 50 ओवर कंसिस्टेंटली खेलते हैं तो आई थिंक आईपीएल में भी खेले हैं तो इट वॉन्ट टेक टाइम फॉर देम टू एडजस्ट टू द कंडीशन. स्टफ एक्सपीरियंस इतना भर भर के है. अब इंडिया की टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे अपन कि भाई इसमें क्या चेंजेस आई हैं. नीचे अगर आप रुकेंगे तो you'll be able to see कि भाई what the players that have been excluded recently from the squad. सिराज नहीं है, शामी नहीं है, चाहल नहीं है, केएल राहुल नहीं है. So it's important कि भाई we notice these changes कि भाई what's happening. तो रोहित शर्मा आपके कैप्टन हो गए. शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल फैंटास्टिक. मेरे को तो बहुत पसंद है यशस्वी बिकॉज ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. टेम्परामेंट जबरदस्त है, एग्रेसिव नेचर है उनका. इवन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जिस तरीके से वो बार बार आउट हो गया, बट इवन इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ द लास्ट टेस्ट वो एग्रेसिव नेचर में गए, फोड़ तोड़ करने गए. एंड ही मैनेज टू मेक बल्क ऑफ द रन्स. 79 का टारगेट था, 48 तक लाके वो फिर आउट हो गए थे. बट अगेन एक्सप्लोसिव, एग्रेसिव, नॉट बैकिंग राउंड. तिलक वर्मा फैंटास्टिक अगेन. उनका भी जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा, हाँ उनका जो सिचुएशन में वो इंडियन टीम में आए क्वेश्चनेबल हमेशा रहेगा कि भाई उनको लाना चाहिए था क्या इतनी जल्दी, बट जितनी जल्दी लेके आए उतनी जल्दी वो आदत भी हो गई उनको खेलने की. एंड ही प्लेड अ फैंटास्टिक रोल. वेस्ट इंडीज में भी अच्छा खेले. इट वाजंट कि भाई ही डन अ लॉट ऑफ रॉन्ग. आई थिंक तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, आई थिंक मिस्टर T20 ऑफ इंडिया राइट नाउ. जिस तरीके से रिंकू सिंह इंडियन स्क्वाड में ही नहीं
लोगों की नज़र में आए आईपीएल में वो 5 छक्के मार के उसके बाद कंसिस्टेंटली मैचेस फिनिश करना, कंसिस्टेंटली प्रॉब्लमेटिक जगहों से इंडिया को कामली कूलली लेके आके मैच जिताना। आई थिंक ये काबिलियत बहुत कम बैट्समैनों में रहती है। उनका महेंद्र सिंह धोनी से भी काफ़ी इंटरैक्शन हुआ जहाँ पे धोनी ने बोला आप काम होके खेलो, आप कंपोज़ होके खेलो। जिस बॉल पे रन्स मार सकते हो, वो बॉल्स पे रन्स मारो। तो रिंकू सिंह इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि भाई काम होके फिनिश द गेम टाइप ऑफ प्लेयर है रिंकू सिंह। तो आई थिंक आई रियली एंजॉय हिज बैटिंग। और रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा विकेट कीपर, संजू सैमसन, अब ये नाम सबसे बड़ी नाम है ये स्क्वाड में संजू सैमसन की, कि भाई ये बंदा यहाँ कैसे आ गया। बिकॉज थोड़े दिन पहले यही चर्चा हो रही थी कि भाई ओडीआई स्क्वाड में डाल दिया था उनको साउथ अफ्रीका के लिए। बंदा ने साउथ अफ्रीका के लास्ट गेम में थर्ड ओडीआई में 100 मार के प्रूव करा कि भाई ही स्टिल हैज इट इन हिम। A fantastic wicketkeeper, good vision in the back as well as a wicket keeping prospect. Now, this could also mean कि भाई शायद संजू सैमसन जितेश शर्मा को केएल राहुल के साथ तोल रहे हैं, and in terms of giving him an opportunity to probably get into the World Cup T20 squad. He still has a chance. He just has to prove himself with whatever opportunities presented him, plus including IPL. अगर IPL अच्छा खेल के संजू डोर तोड़ दिए, अगर दरवाजा तोड़ के फोड़ के रख दिए, then it will be fun to see कि भाई if Sanju Samson will be able to play T20. But that's again on him. Injury free रहना जरूरी है, consistent runs मारना जरूरी है, आवाज बनाना जरूरी है. So I think Sanju Samson has to take this opportunity by every hand possible with whatever matches that he gets. शिवम दुबे जबरदस्त हैं, रिटर्न वापसी उनकी इंडियन स्क्वाड में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं ये साल। नॉट अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छा तगड़ा मारते हैं, तो इट्स गुड। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, सो वी हैव गॉट अ गुड ऑलराउंडर ऑप्शन इन शिवम दुबे एंड वॉशिंगटन सुंदर। यू गॉट तिलक वर्मा आल्सो एन एडिशनल, सो 3 ऑलराउंडर्स उधर हैं। फिर कुलदीप यादव ऑब्वियसली करंटली इंडिया के जो बेस्ट स्पिनर होंगे आई थिंक। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल अगेन अनदर ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर की कमी नहीं दिख रही है स्क्वाड में। यू गॉट ऑलराउंडर्स क्वाइट वेल प्लेस्ड, अच्छे खासी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम ही है, इट्स नॉट लाइक इट्स अ वीक टीम। रवि बिश्नोई अगेन वेरी गुड लेग स्पिनिंग ऑप्शन, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने डाला, आई थिंक रवि बिश्नोई वाज फैंटास्टिक। अर्शदीप सिंह जो हाल हाल में रिटर्न कर रहे हो वापसी, उनका जो बॉलिंग को काफी क्रिटिसिज्म मिली है, बट देन लास्ट 2 ओडीआई जो साउथ अफ्रीका में खेले, ही इज बीन बॉलिंग अ फैंटास्टिक स्पेल। 5 उठाया उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो a good comeback from him. And Avish Khan and Mukesh Kumar. Mukesh Kumar again मूवमेंट की वजह से शायद उनको शायद थोड़ी बहुत अर्ली स्विंग मिल जाती है, थोड़ी मूवमेंट मिल जाती है लैटरली। सो आई थिंक उसके वजह से वो एंड इट्स बीन गुड। इट्स नॉट लाइक उनको कोई मैच में पीटा गया है, ऐसा बुरा बुरा मारा गया है। काफी डिस्गाइजेस नहीं, उनके पास काफी वेरिएशंस नहीं है, बट कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ है। थोड़ा कभी कभी शॉट डाल सकते हैं वो, बट टिल ही डजंट फाइंड द लाइन थोड़ा मुश्किल है। बट इफ ही डज फाइंड द लाइन, गेट्स द मूवमेंट, मुकेश कुमार काफी डिसेंट बॉलर है। नाविश खान अगेन हार्ड वर्कर है, कर ले। तो ओवरऑल टीम तो तगड़ी है भाई। अब सवाल ये होता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के एस्पेक्ट से आप ये टीम को देखो तो आप हार्दिक पांड्या, अब जो नीचे नाम है प्लेयरों के जो आपके स्क्रीन पे जा रहे हैं, द प्लेयर्स दैट हैव नॉट बीन सिलेक्टेड एंड द प्लेयर्स दैट हैव बीन इंजर्ड। तो इंजर्ड प्लेयर में तो आपके सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बिकॉज ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स। अब मिसिंग प्लेयर्स में से जो सिलेक्टेड नहीं है, देखिए केएल राहुल हो गए, ईशान किशन हो गए। अब ये सवाल आप पूछेंगे कि भाई जितेश और संजू सैमसन को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, यू कांट से, बिकॉज साउथ अफ्रीका में आपके केएल राहुल और ईशान किशन को चांस दिए थे, बट ईशान किशन को एक मैच खिलाया नहीं गया था। देन आपके पास केएल और जसप्रीत बुमराह विल वॉक इनटू दिस स्क्वाड। सो आवेश खान, मुकेश कुमार, इनमें से किसी का पत्ता कटेगा। शामी है, सिराज हैं, विल यू टेक शामी टू द T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट टाइम 2022 में करा था, बट वो इंजरी के बाद था। तो डेफिनेटली आई थिंक द होल नेशन विल वांट टू सी। सो there's still a lot of loopholes, a lot of ways that the players that are not selected will still get selected. So this जो टीम जा रही है doesn't mean कि भाई ये एग्जैक्ट वर्ल्ड कप की टीम है, बिकॉज आपके पास अभी आईपीएल है चांस करने का, प्रूव करने का। कोई तोड़ फोड़ प्लेयर अगर आईपीएल में निकल गया, हम पास में भी यही देखें कि भाई इंडिया, टेंडेंसी इंडिया की यही है कि भाई अगर कोई आईपीएल में परफॉर्म कर गया तो उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप या कोई बड़ी टूर्नामेंट में आप लेके घुस जाते हो। होपफुली ये गलती, आई थिंक ये साल ये टाइम होने की कम आवश्यकता है, कांट से कि 100% है, बट कम है बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर सीइंग, कि भाई एक कोर टीम बनाई जाती है हमेशा, और एक कोर टीम को ही आप कैरी ऑन करते जा रहे हैं। सो इट्स फन to see this team right now, but you still have your KL Rahul on the bench, or Jasprit Bumrah on the bench, or Mohammad Shami on the bench, Siraj on the bench, Iyer on the bench, Ishan Kishan. I'm not even counting Chahal because उनको तो स्कीम में रखा ही नहीं गया है काफी टाइम से, राइट। तो मैं जिस तरीके से देखा अभी अय्यर, केएल राहुल, ये लोग है। Update on Bumrah, I mean, I'm not pretty sure. I think he's just been rested. I'm not very sure कि उनको इंजरी हुई है कुछ, प्रॉब्लम है उनको, so he's not here right now in the squad.
and I guess it's also because they want to rest him. काफी उनको डाला गया है, they bowled him a lot in South Africa, and he's been playing consistent cricket since the Ireland tour. He played against Ireland for a comeback, then he played the Asia Cup, then he played the World Cup. He was rested for the Australia thing, but he then came back against. I think they just want to rest him for the five tests as well. And again, then he got an IPL, then he got a T20 World Cup. So I guess it's that, unless there is an injury that I'm not aware of. I'm not pretty sure because he would have been. I mean, for him, even if he doesn't play this, it's not like he's not going to get selected. I think he's going to be more or less selected, but it's again maybe just wanting to rest him because he has been playing cricket consistently. And given unka track record of injuries, they just want to keep him fresh. But this team does look solid. I think it's a good team, but there's still a lot of players that will be able to come back. And for the team, players like Sundar, Dube, Sanju, Jitesh, इन लोगों को अच्छा opportunity to get into the squad, to get in, the Indian squad. But again, ईशान किशन का सवाल बहुत ज़्यादा है मेरे को कि भाई where is ईशान किशन? Why? What's happening with him? ईशान किशन World Cup, Asia Cup, वेस्ट इंडीज से कंसिस्टेंट क्रिकेट खेले, चलो आपको ब्रेक चाहिए था, आप साउथ अफ्रीका में भी जाके आप हार्डली कोई मैच खेले आप. Now, is there a problem with the management that he has? It doesn't look like that because सब उसकी तारीफ करते हैं, सब यही बोलते कि ईशान किशन बेस्ट प्लेयर है to have around the, टीम का मोमेंटम बढ़ाते, टीम को पॉजिटिव वाइब देते. अब जो न्यूज में आया था कि भाई उनकी मेंटल हेल्थ इज द कॉज ऑफ कंसर्न, उनको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए था फ्रॉम द क्रिकेट एटमॉस्फेयर, एंड अगेन जेट लैग, ये वो 10 चीजें थे. बट अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम है अभी, आई थिंक ही कुड हैव मेड अ गुड इम्पैक्ट इन दिस टूर्नामेंट, प्रॉब्ली सील्ड हिज स्पॉट फॉर द T20 वर्ल्ड कप. बट अगेन आई डू अंडरस्टैंड, अगर मैं उनके तरफ से देख रहा हूँ कि भाई वो काफी टाइम से ही प्रूव्ड हिमसेल्फ सिंस वेस्ट इंडीज, एटलीस्ट ही बीन प्रूविंग हिमसेल्फ कंसिस्टेंटली. एशिया कप में आल्सो ही हैड अ वेरी गुड नॉक, but the world cup was played entirely by KL Rahul and he was just a substitute, but that didn't look like it bothered him. Must probably be something else. जिस तरीके से ईशान किशन as a person है, and as a player, I don't think that really bothers him कि भाई उनको नहीं खिला, is a team guy, but they बोल सकते भाई किसको क्या बुरा लग जाता आजकल. Is Rohit selected as captain because India needs a captain if Pandya is injured? Yeah, I think that's the case right now because Hardik Pandya is injured, and अभी जो न्यूज निकली थी कि भाई आईपीएल तक he's not going to in probably play IPL. So that's where Rohit Sharma will enter, right? Because सूर्य कुमार को खाली दो ही opportunities मिले अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, against Australia after the World Cup and South Africa. So that is not enough to take you all the way to a T20 World Cup and captain you. That is what I feel. अब आप क्वेश्चन करेंगे कि धोनी को दिए थे, बट धोनी के एरा में तो स्टार्ट हुआ था जब T20 क्रिकेट, so it's a different thing. For me, I think Surya Kumar might not be able to lead the squad, but he'll definitely be in the squad. And Rohit Sharma का again experience है, he's the captain since long time, and I think वही है कि भाई World Cup opportunity है जिताने का and वगैरह वगैरह वगैरह. So I think रोहित शर्मा डज फिट द बिल. और कोई करेगा नहीं, रोहित शर्मा सॉरी विराट कोहली करेगा नहीं. शुभमन गिल का तो पोस्टर स्टार स्पोर्ट्स वाले खुद ये टूर्नामेंट के लिए डाले थे कि भाई ही इज गोइंग टू बी द कैप्टन बोल के. सो नोबडी एक्चुअली इवन न्यू रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने था. दे थॉट दे मेकिंग अ न्यू कैप्टन इन शुभमन गिल, बट आई थिंक दैट वुड नॉट बी फेयर ऑन सूर्य कुमार अगर शुभमन गिल को कैप्टन बना देते थे फिर. एंड देन हार्दिक पांड्या इफ ही डजंट कम बैक, हु विल बी द कैप्टन? सो प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जल्दी जल्दी रोहित शर्मा को डाल दिए वापस, बिकॉज अगर सूर्या बनेंगे फिर शुभमन विल बी इन सेकंड कमांड एंड whatever. So I think that now if Hardik Pandya comes back, does Rohit Sharma still be the captain? That will be the biggest question, which I feel Hardik Pandya should deserve, because Hardik Pandya 2023 पूरा 2023 हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी करी, पूरी टीम उनके अराउंड और उनके नजर में और क्या बोलते उसको जो भी बोलते विजन में बनी उनकी. तो आई थिंक हार्दिक पांड्या should retain the captaincy if he is back, but again first he has to play the IPL, then he has to sort of make a comeback. So it's still a long wait कि भाई we wait till we know what the World Cup squad is going to be for India and stuff like that. But good to see Rohit Sharma and Virat Kohli in the T20 squad. Now does that confirm the fact that they're going to America? And I have with me Ronaldo on the show. What's up, brother? Wow, रोहित शर्मा is captain. Apparently इतना टाइम लगा है because विराट कोहली के ऊपर डिसीजन बन रहा था. विराट कोहली डिसीजन लेने वाले थे या उनके लिए बन रहा था? उनके लिए, मतलब he was not it was a call on him apparently. ओहो, कॉल उनके ऑन वजह विराट से मतलब उनको लेना या नहीं लेना स्क्वाड में. There was reports that Rohit Sharma wanted Kohli in the team. Other people said that no, we don't want Kohli, but there was also talks कि either you take both of them or you don't take both of them, and now they're both in the team. क्या देना आगे विराट कोहली को लाइट ले ले रिपब्लिक बोले तो लाइट. आई थिंक दोनों, मेरे हिसाब से दोनों को लाइट लेना था. आप लाइट तो लेना था,
लेकिन अब अगर आप देखो इंजरी के अंदर दो कैप्टन ऑलरेडी है, सूर्या और हार्दिक, और आप ये टीम में अगर आप शुभमन को आप कैप्टन बना दोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी द राइट स्टार्ट, बिकॉज़ then what Who happened when knows? Surya comes back? What But happened when Surya comes back? what difference? What difference does it make if it's not the right start? That means he's not going to win the World Cup, right? If you, that's what you're saying. No, What no, I'm difference? just saying in terms of the first in command is Hardik, then it's going to be Surya. Why do you want to add another captain and like add Shubman Gill? Why are you going? You Why tell. would why? Because you already have this guy, right? In the scheme, not in the T20 scheme of things, but you have a captain material already. What can you Why would get? you want to build a new robot for something that's already a good, like Because you're gonna existing look to robot? the future. Because you're gonna look to the future. Abhi tum You baat already have in a Surya Kumar, right? Already in a Surya Kumar, you've already looked into the future, but your both future prospects are injured right now. So another third future prospect, like that's just my way of looking at things. आई डोंट अग्री विद दैट। आप उसको अगर आप ऐसा करें तो आप इन लोग क्या जीता है, आपको कुछ तो नहीं जीता है, राइट? तो क्या फर्क Mm. पड़ेगा, आप किसी और को बना दो कैप्टन। बिकॉज नाउ यू सी दिस बॉलिंग लाइनअप, दिस इज गोना Yeah. चेंज। Yeah, दिस 100%. You look at the इज list down with the players that are not selected. You don't have KL Rahul, you don't have Ishan Kishan, you don't have Jasprit Bumrah, you don't have Shami, you don't have Siraj, you don't have Iyer. So half of this team are already not going to play in this. Whatever 16 you're saying, probably six No, or seven people. I think KL Rahul has been dropped from T20s. That's why he's not in this thing. They're going to go stick with Jitesh Sharma and Sanju Or are Samson. they resting everybody like Shreyas Iyer, KL Rahul for the नो test matches? नहीं, they तो भाई, if किसी को भी रेस्ट करना था, उन लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा are the first people to rest in this team. They're not resting. Hmm. That means only the faster bowlers are getting rest, in my opinion. I can be wrong, but I don't think there is thing. And Rohit Sharma is back captain, but there's a huge problem that happened that I'm not aware of it, you're not aware of it, nobody, मगर बहुत बड़ा मसला हुआ because Yeah. अफगानिस्तान की टीम के लिए आप इतना टाइम क्यों लिए? What happened? Like आप साउथ अफ्रीका गए, फिर इंडिया वापस आके डिसीजन लिए. What was the problem? Some people are saying Hmm. it's Virat Kohli was the problem. Some people are saying Rohit Sharma was the problem. Some people are saying both are the problem. But there is some big issue in this team selection that we are not aware of what the exact problem is. Yeah, I mean, evident. अभी मेरे को तो सबसे बड़ा सवाल ये सब का भी नहीं है, रोहित शर्मा विराट कोहली बैगन पकड़ो, ईशान किशन का है यार, उन्हें इसको क्या हो गया मेरे हिसाब एकदम। मेरे या तो हिसाब उसको से यकीन आ गया कि इन्हें थर्ड लाइक ही इज नॉट गोना बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, बोल दिए तुम्हारे मुद्दा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम, बिकॉज वेस्ट इंडीज में अच्छा खेला, एशिया कप अच्छा खेला, वर्ल्ड कप में तो एक बार भी नहीं खेला, एक दो बार खेला, वो भी डिसेंटली खेल लिया, चलो ही लुक्ड वेरी शेकी बट खेल लिया। उसके बाद आप केएल राहुल को लेके आए, उसको कैप्टन बना दिया ओडीआई का। टी20 में आप जितेश शर्मा को खिलाए, आप ईशान किशन को नहीं खिलाए। तो दैट इज वेयर द क्वेश्चन, बट दिस गाय हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया तो then it आफ्टर। comes, आप बोले, आप अभी क्या बोले थे, आप एक गलत चीज बोले, आप बोले रोहित शर्मा को भूल जाओ, विराट कोहली की चीज को भूल जाओ। गलत क्यों है आप इसमें? बिकॉज the reason why Ishan Kishan is not in this team is because of Rohit Sharma. Where But does Ishan no, Kishan no, play? the wicket And keeping Virat option. Kohli. The wicket keeping That is option. why he's not in the because उन्हें कहाँ खेलता, T20 में ऊपर खेलता, राइट? तो हाँ, but उन्हें only 5-6 भी खेल सकता, he can play a 6 also, खेल see सकता, that. मगर where is his position at the top? If Okay. Rohit Sharma and Virat Kohli are not in this squad, where is Ishan Kishan? He's at the top. But then see you in the still have IPL Shubman Gill and Jaiswal. You still have Shubman Gill and Jaiswal there, right? And you've but got Shubman Gill will come one down or whatever. This guy will play at the top, Ishan Kishan. The reason why he's not in the team is because of these two guys. That is my opinion. Because if you need to play in the middle order, they're saying ki bhai Ishan, I know he can play in the middle order, you also know. But in T20s, where does he play? IPL mein, where does he play? In the top three, right? Generally top two. So the reason why he's not in the team is because of your boys Virat Kohli and Rohit Sharma. It goes back to that. उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई कोहली कौन सा वैसे तो बोल रहे नहीं होना था। भाई मैं बोल रहा हूँ कि गो विद द न्यू टीम, T20 अलग करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें क्वालिटी प्लेयर नहीं है या वो है ये है। आई सेड you've tried them already. आप लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स देख लो, you haven't won anything. Just go with something different and see. आप उसको खिला रहे because he is Virat Kohli. I understand. जब न्यूयॉर्क में मैच रखे, मैं समझ गया इन्हें पक्का स्क्वाड में आएंगे दोनों, लेकिन it's a T20 format. Why not try a young team, a different kind of team? You already have experience over there in Hardik Pandya, Surya Kumar and stuff like that. So you didn't really need to play them. But there's no problem. It'll be fun. I think it'll be fun. But if India don't win this World Cup, I won't be surprised. या नहीं वो तो सरप्राइज नहीं रहेगा। द क्वेश्चन बस यही है कि अब रोहित शर्मा की सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रहा, बिकॉज अब सूर्य कुमार यादव बहुत नया नया कैप्टन है, 2 ही सीरीज है। आई गेट कि आप बोल रहे हैं कि उसको ले लो कैप्टन, उसको बना दो कैप्टन। अभी देखो अभी भी ये फाइनल टीम नहीं है जो हमला दिमाग में बना ले रहे रोहित शर्मा विराट कोहली। आई एम श्योर मुझसे बोले वो पॉइंट 100% है कि न्यूयॉर्क है बोल के जा सकता। अगेन यू स्टिल हैव टू वेट your time. Injuries can happen to anybody at any time. Yeah, that's the only thing which is stopping. Otherwise, they're going 100% to the World Cup. But the point ये है कि भाई जो
आप नई टीम को लेके जाओ, मुस्तफा भाई का पॉइंट ये है कि आप नई टीम को लेके जाओ या पुरानी टीम को, फर्क उतना ही नहीं पड़ने वाला है। हाँ जीते तो इट बी लाइक हाँ चलो जीत गए, बट लाइक हारे तो यूल बी लाइक हाँ भाई ये तो हमेशा का है, इससे अच्छा आप पूरे नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे दो। तो एक्सपीरियंस अब्दुल देखो रहमान भाई बोले आज नए लड़कों का परफॉर्मेंस निकालो इन लास्ट 1 ईयर भाई, पहले फिर बोलो आप गिल ने क्या फाड़ लिया अब तक इन T20 में, निकालो स्टैट्स देखो। इन लोग भी लाइक अगर आप अगर स्टैट्स इंडिविजुअल देख रहे तो आपका आर्ग्यूमेंट मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि इन लोग कुछ जीते नहीं। आप बहुत मौके दे दिया, आप रोहित शर्मा के भी स्टैट्स निकाल लो T20 के कौन से अच्छे हैं। आई डोंट थिंक आई थिंक इवन उन्होंने ज्यादा कोहली के उस पे बोल रहे हैं अच्छा अब्दुल आप रहमान कोहली भाई। के भी ले लो, ठीक है, पाकिस्तान का मैच है, राइट, पाकिस्तान उसके का बाद मैच में है, and after that he has numbers, but like if like you know he has numbers over there, he's batted well and all that, but I'm saying that still with him you have not won इतना, आप या उसको इतना you know at the level Virat Kohli is, he's still not won, so I'm just saying try somebody else. Man, you had the perfect opportunity here in the 50 over World Cup, you still didn't win, so I'm saying what difference does it make? Because you, if you're going back to these guys and they don't win again, you're going to have problems in the very near future. फिर क्या चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है नेक्स्ट ईयर, फिर आप बोलेंगे नहीं कोहली रोहित शर्मा जरूरी है, फिर आप बोलेंगे नहीं कोहली रोहित शर्मा जरूरी, you have to make a change somewhere. अब वही है ना, या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पर्स करो, अलग अलग कर दो, रोहित शर्मा विराट कोहली का पूरे को पूरे हटा दो, या आप खुला बोल दो हम खिला, आप इधर एक पूरा साल 2023 में इन लोगों को पिक्चर में नहीं रखे और आप एकदम ये पिक्चर ला लिया कि भाई फिर रोहित शर्मा विराट कोहली, तो दैट्स द क्वेश्चन थिंग कि भाई 2023 में देयर वाज नो साइन ऑफ दिस गाइज इन द T20 स्कीम ऑफ थिंग्स वेयर एवरीबॉडी, आई एम प्रीटी श्योर अब्दुल रहमान भाई को मिला के सोच रहे होंगे कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा खत्म इन T20, तो आप सोच देख रहे भी नहीं थे उनको इंडियन सीरीज के लिए, एटलीस्ट आईपीएल छोड़ दो। फिर हार्दिक इंजर, ये हार्दिक है यार फसाद की जड़, उन्हें इंजर हुआ बोल के हो रहा है ये सब, ये उन्हें तो नहीं मगर इंजर। हमारे को मालूम था कि हार्दिक इज इंजरी प्रोन गाय, आप उसको हाँ नहीं कप्तान मैं बोला बना दिए। फसाद की जड़ इसलिए क्योंकि अगर उन्हें इंजर नहीं होता था तो फिर कैप्टेंसी का तो मैटर उधर प्रॉब्लम ही नहीं आता था, ही वुड हैव बीन द कैप्टन, रोहित शर्मा वुड हैव बीन So एलिमिनेटेड। now if Hardik Pandya plays the full IPL, right, and he's And I, fit for the yeah, World now Cup, that then is the only reason I see, that's the only way I see Hardik Pandya if he plays, and if they then make Rohit Sharma captain, then that's wrong because Hardik Pandya would deserve the captaincy. but Rohit Sharma and Virat Kohli will still go. I don't know, I don't think so. The 100%. आप ये जो टीम बनाए, ये जो हाँ अफगानिस्तान टीम बनाए, why are they playing in this series? You think they're playing for what? Just because Surya? You're thinking they're playing there just to make to be replaced Surya and think no, they're playing there because they want to be in the T20 World Cup squad. Why will they play? You tell me honestly. yeah, that I realize. I'm just saying if Hardik Pandya does come back, then it's the question that like you'll probably take Rohit Sharma, but I don't know like where will we play because then you've got Shubman, you got then it'll be unfair again. Exactly. It'll be the वो whole. तो यही तो है, मगर 100% रोहित शर्मा and विराट कोहली, like unless there is an injury और खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, they're going 100. If they're fit, they're going to be in a, Now the question is अगर आईपीएल में कोई ब्रेकआउट प्लेयर मिल गया फिर उसको आप घुसाएंगे या नहीं घुसाएंगे, बिकॉज ये टेंडेंसी भी आप देख चुके। I don't think so unless there's a bowler here and there. बैटिंग में तो जगह ही नहीं है, आप किसको घुसाएंगे बोलो? हाँ वो Unless जो बैट्समैन गायकवाड अभी या है ऐसा। ना बेकार फॉर्म में, आई डोंट नो, क्या नहीं बोल सकते टीम का कुछ भी। No, I don't think like you can. I really don't think they'll do something. Even if someone has a crazy series or something like that, I think they've made their mind up. Ki it's going to be a similar team. The only guy who has a chance, two guys, is Shreyas Iyer, KL Rahul, in terms of the batting to come into this lineup. Otherwise, if they have a crazy IPL, but these are not young talents. अब ये स्क्वाड में आप देखो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है ऑलराउंडर के, आपके पास सुंदर है, दुबे है, तिलक वर्मा है, यू गॉट अक्षर पटेल, सो दैट्स गुड टू सी के 4 यूटिलिटी प्लेयर्स है No आपके पास। Jadeja. नो जडेजा, उसका जीरोक्स है। No, yeah, no. That is surprising, but I don't mind. Like I like Washington Sundar, Akshar Patel, Kuldeep Yadav. I think that's a good and Bishnoi. ये चार spinner I think लेके जाना World Cup को भी. I think that's a good. It's a good spin quartet and they can take wickets. I just want to see ये bowlers का क्या होने वाला है. Do Shami, Bumrah, Suraj walk in or I because think Bumrah will walk in again subject to fitness. Bumrah will walk in. वो तो irreplaceable बंदा है, like I think everybody will agree. वो बंदे को आप replace नहीं कर सकते। Shami Siraj का I think will be on the basis of IPL versus Arshdeep and Mukesh का. It's going to be IPL and dictate the cook of bowlers. आप देखो bowler को तैयार कर रहे हैं, अगर उन लोग नहीं भी रखे राइट, इन लोग को एटलीस्ट इन लोग को तैयार रख रहे हैं by making them play. So I don't mind this actually. These bowlers playing.
because then you can rotate. Bumrah, like you said, उन्हें तो कभी भी walk in कर सकता. If he has a bad day, he has a bad day. Otherwise, generally he's like a player that you'll always select. But giving these guys an exposure, even if it's against Afghanistan, I think it'll help them. It'll prepare them just in case भाई जरूरत कभी भी पड़ सकती. आप देखो पाकिस्तान दो उनके पेस बॉलर्स इंजर हो गए थे, लाइक नसीम इंजर हो गया था, then they didn't know what to do. यहाँ पे if you यहाँ पे तैयार करें आप bowlers को, I think it's good to have those options. या तेजल भाई बोल रहे Sanju मुकेश कुमार. Samson, I'm the happiest for him, हाँ. and he's in the squad. I'm so happy for him. He deserves it. That's why I'm not too sad about the squad. I think it's a strong squad, but Sanju Samson being there, मैं बहुत खुश हूँ. उसको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, I don't know. At least अभी तक उसको वापस लेके आए, and I hope that he gets a chance because Sanju Samson is a quality player. His last match he scored 100, I think, in 50 over. तो उसको खिलाना मेरे हिसाब से उसको रखना एटलीस्ट स्क्वाड में बहुत अच्छी बात है. अब सवाल वही है ना भाई, उन्हें रहना स्क्वाड में, बिकॉज जितेश शर्मा, केएल राहुल, वो सबसे बड़ा वही केएल राहुल ही है. लाइक ही कैन अगेन आईपीएल में अगर उन्हें अंगार लगा दिया तो फिर केएल राहुल आ जाएगा कहीं ना कहीं से. But उसके right बाद now, ईशान किशन भी है. आई स्टिल फील कहीं ना कहीं अगर ईशान किशन का चल गया बैट 5-6 पे उसको बिठा देते कहीं तो भी, या तो मुंबई को बोलेंगे मैं 5-6 पे खेलना चाह रहा हूँ, लाइक लाइक केएल राहुल. अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेला तो इसलिए तो केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलना चाह रहा लखनऊ के लिए, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों को टॉप ऑर्डर कीपर नहीं चाहिए, उनको मिडिल ऑर्डर कीपर चाहिए. दैट्स व्हाई ही वांट्स टू स्विच. इफ ईशान किशन स्विचेस देयर एंड प्लेज देन सो बी इट, बट आई थिंक you won't see much change unless KL Rahul has 800 run or 600-700 run IPL. The things won't change. अगर उसको लेना था अभी ले लेते थे, because मेरे को ये कोहली and Rohit being in this squad, this is serious that कि भाई इन लोग T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं. नहीं तो इन लोग कभी भी ये सीरीज नहीं खेलते थे. इंडिया अफगानिस्तान गेम, no chance. After coming from South Africa, there was no chance. They would say we want rest. There's an England test series coming up. 5 टेस्ट है, टेस्ट मैच. बहुत ज्यादा है. मार्च तक यार, मार्च के बाद सीधा आईपीएल है. हाँ, हम उन लोग क्या बोले, नहीं भाई हमको खेलना है. You think they would have played this series? There's no chance. They're only playing because, and it's also I'm sure because इसके बाद है ही नहीं कुछ, because इसके बाद आईपीएल के बाद कोई सीरीज नहीं है ना. T20 नहीं है कोई सीरीज. और आई एम श्योर कि सेलेक्टर या जो भी बात करे इन लोगों के साथ कि भाई अगर आप वर्ल्ड कप में खेलना चाह रहे हैं आपको ये सीरीज खेलना है. एंड आई एम श्योर रोहित शर्मा के साथ आई एम वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई ये बात क्या हो रही, बिकॉज हार्दिक पांड्या वाज द इंडिया कैप्टन फॉर द लास्ट ईयर. He's now made Mumbai Indians captain. Now Rohit Sharma is captain. I still feel it's not a stand-in thing. I think it's a World Cup decision. I can be wrong. I'm not 100% sure. मगर मेरे को ऐसा दिख रहा है he's made captain because you could have made someone else captain. I feel just a stand-in for this series and wait for Hardik to come back. But I think either they're not showing Hardik Pandya's fitness or they want Rohit to captain in the. No, so Hardik Pandya fitness का वही update आया था कि भाई आईपीएल तक भी मिस कर सकता. So that is also why Rohit Sharma is in the squad, right? Because उसका तो आईपीएल के बाद तक problem है. Yeah. So maybe that's why. But they're looking at Rohit Sharma as captain for the World Cup. That's why they're giving him captaincy here. नहीं तो उसको ये सीरीज के लिए तो नहीं ले आते कप्तानी करने के लिए. But अगर वही है ना, like the point वही जैसे बोले आप, there's no series after that, and you got this, then you got the IPL. So that's the only two measuring places to measure कि भाई किसको ले सकते किसको नहीं ले सकते. शिवम दुबे again good shout, अच्छा prospect है. I would not say कि नहीं अच्छा prospect है. But I don't think उसका पत्ता बनेगा because again I think उन्हें उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है अभी तक, लेकिन I like that they're trying to put a all-rounder there जो bowling और batting कर सकता. इससे एक चीज ये हमारा होप बन रही है आईपीएल वाले प्लेयर होंगे भाई कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई सीरीज. अगर आप T20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका का देख लो, उसमें आपके जडेजा थे, आपके गायकवाड थे, आपके व्हाट्स हिज नेम जडेजा थे, सूर्य कुमार थे. तो अ लॉट ऑफ चॉप एंड चेंज हो गया. तो या तो आप ये करेंगे कि आप ये साउथ अफ्रीका की टीम लेंगे और ये अफगानिस्तान की टीम लेंगे और फिर आप एसेस करोगे कि भाई बेटर कौन खेले, इनका नाम डालो, इनको नाम निकालो, इनका नाम डालो, इनका नाम निकालो. So maybe that also could happen कि भाई they'll probably do it on the basis of that. And then again जसप्रीत बुमराह इनला तो आ जाते हैं unless सिराज और शमी का आईपीएल उतना खास नहीं गया. तो अब वो सवालात फिर है कि बॉलर्स का बहुत क्वेश्चन है कि फास्ट बॉलर्स इन पर्टिकुलर कौन रहेंगे. Yes, Tejas bhai बोले Shivam Dubey is just there to give Hardik a strong message. I think it's much needed. Give him some competition there. आप 11 क्या बनाएंगे इसमें से? 11 मेरे को तो रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली. उसके बाद शुभमन गिल one down. Yeah, I like Jaiswal a lot. Like I want left hand right hand combination. And then you've got Shubman Gill, then you've got Virat Kohli. You've got who else can I take in this fifth?
Rinku. Rinku will be fifth wicket keeper. I'll put Jitesh Sharma because he's the guy who's been playing regularly. Uh, Shivam Dubey, Akshar Patel. हाँ. Actually, Sundar को लेंगे. अक्षर पटेल को नहीं रखते. सुंदर is also a good option. सुंदर है. उसके बाद कितने हो गए हैं? फिर अर्शदीप, मुकेश, कुलदीप भाई and I think Ravi Bishnoi. I would like to open the batting with Rohit Sharma, Virat Kohli. Hmm. Then one down, you can choose between Jaiswal, Shubman Gill. Two down, Tilak Verma. Three down, Sanju Samson. Four down, Rinku Singh. ये आपके 6 हो गए. फिर आप 7 पे खिलाओ, सुंदर को खिला लो. उसके बाद 8 पे कौन है? तो I picked 7, right? Yeah, अर्शदीप है, अवेश है. अर्शदीप, अवेश खान, मुकेश कुमार, ये 3 हो गए. तो ये कितना हो गया? 10. कुलदीप यादव 11. ये रोहित भाई, रोहित, जायसवाल, कोहली, तिलक, रिंकू, जितेश, शिवम, अक्षर, कुलदीप, मुकेश, अर्शदीप. शिवम का भी था मेरे को थोड़ा, but then I just went like a little Sunrisers. I think the only reason why I'm saying Kohli in the Opening. opening slot because I think he'll get more boundaries by piercing the gap power play में. अगर In उन्हें the वन power डाउन play. आता है फिर उसके बाद because आप आरसीबी में भी देखो ना जहाँ ओपन करता उन्हें बाउंड्रीज यहाँ वहाँ कर ले सकता. And then just have attacking players, man. After that, 1, 2, 3, 4, 5, like जो भी है मानने दो. And I think that's what I like. If you just play both of them and see how it goes, it'll be cool to see them open, and then you can. I think it's also good wake up call for Shubman Gill to start finding his form because Shubman Gill थोड़ा बहुत lost हो गए बीच में. But I he's think for he's a me. class player, no I'll doubt, be but he very just needs to patient wake with him up. him. I know a lot of people won't be. I'll be very patient with him. I just feel that there is quality there. But yes, of course, he will be. He's No, already been good, 100% क्वालिटी rightly से so. शक नहीं है. इट्स जस्ट कि भाई थोड़ा आपको कोई कंपटीशन जब आता तो आप थोड़ा ट्रेम्बल करते. दैट्स व्हाट इट्स गुड टू सी कि भाई उनको मिल रहा है. अगेन मेरे आपके लिए तो हिसाब से ये टीम जीत सकती वर्ल्ड कप? you need Jasprit Bumrah. That's it. Like in this squad, you need your Jasprit Bumrah bowler. Apart from that, I like the squad. You think they can win? They can win if they get Bumrah and then they complete that set. I think approach will Because be you see Hardik Pandya's contribution in cups not that great. Shreyas Iyer again, it's all right. KL Rahul not needed in this format. Surya Kumar also well needed in that squad. हाँ. नहीं मेरे हिसाब से आपका इंटेंट आपका जो माइंडसेट रहेगा द वे यू प्ले will be very important because you've been battered in the last couple of World Cups. Let's be honest, even that Pakistan game, we were very lucky. We were dead, bro. And then we got a no ball in our favor and all that. वो भी like dicey no ball था. Like I don't think it was convincing that we got to the semis. But आप जो तरीके के क्रिकेट खेल रहे T20 में, it's not been convincing so far. I just feel that we have the potential, लेकिन वो ये दबा के एग्रेसिव खेलो. आप आउट हार गए तो हार गए, एग्रेसिव खेलो. लेकिन नहीं सही इंटेंट डिक्टेट करेंगे आपका कोर्स इन द वर्ल्ड कप. बिल्कुल. और जिस तरीके से वो 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जिस तरीके से खेला आप, दे वर एग्रेसिव. रोहित शर्मा वाज द अटैकर, द एग्रेसर इन द बिगिनिंग. That was breaking it down, right? And then Virat Kohli would come and hold the fort. But the problem there is, I'll tell you what the problem there is. In 50 over, you're afford to take your time. Virat Kohli took deliveries, right? Like when he needed to. Like Shubman Gill consumed when he needed to. Rohit Sharma was the only guy who was playing like daba ke de raha tha. Shreyas Iyer, KL Rahul, when they needed to, they took deliveries. Here you can't afford that. And also another thing, you're playing in a country. In 2007, when we played in West Indies, what happened? Sorry, in 2007 we played in West Indies. Yeah. जो हार वर्ल्ड 50 ओवर बोल रहे. हाँ. बांग्लादेश से हारे थे वो. फिर 2009 में when you played 2010 में आप जब खेले वो क्या हुआ? 2010 में किधर खेले? T20 वर्ल्ड कप. T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेले थे? याद नहीं आ रहा मेरे को. फिर से आप ग्रुप सुपर 6 में आउट हो गए. हाँ. राइट. तो वेस्ट इंडीज में आपकी बैटिंग लाइक थोड़ा सा फंस जाती है वहां पे बिकॉज बॉल कभी कभी रुक के आता, कभी बॉल लाइक वी सीन इट इन दुबई आल्सो दैट काइंड ऑफ रुक के आता, थोड़ा सा अनइवन रहता, थोड़ा अलग रहता. वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट क्रिकेट इन द वेस्ट इंडीज. तो नाउ विल दे बी एबल टू प्ले दैट फ्री फ्लोइंग? यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया.
let's see how it works out. I think like whatever team you send, you have to back it and see, like just try to find the best. Now you've made the squad, you find your best 11 and go for the kill. थोड़ा सा रोटेशन रखो आप, एंड जो प्लेयर्स है उन लोग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो कि भैया ये रोल आपका चेंज हो सकता है, एंड अग्रेसिव खेलो, मारते जाओ, बिकॉज इंग्लैंड नहीं रुकने वाले, वेस्ट इंडीज नहीं रुकने वाले हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट. Australia as well have that potential to bat very deep, and they'll also go for it. So Yeah. I think India can make semifinals, but again, to go the extra mile, they'll have to play out of the skin. They have to play out of the box. थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा. या थोड़ा बहुत अफगानिस्तान की भी स्क्वाड देख लेंगे. These guys are challenging in this competition. T20 is their strong front, right? Like Strong to ये suit, लोग, yeah. और जॉनथन ट्रॉट जो इनक्रेडिबल काम करा, एक्सटेंशन मिल गया उनको वर्ल्ड कप में. ही वाज फैंटास्टिक विद देम. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का जो था, इट वाज हार्ड पिल टू स्वॉलो. लेकिन अगर आप जिस तरीके से ये प्लेयरों को आप देखो, जो आप वर्ल्ड कप में देखे और आप देखे, तो दे लुक लाइक अ टफर ऑपोजिशन. पर्टिकुलरली हाँ. टॉप ऑर्डर इंप्रूव हो गई, मिडिल ऑर्डर अहमद शाह जो होल्ड कर रहे आके, गुरबाज, वी नो व्हाट कैपेबिलिटी है. बॉलिंग उनकी राशिद खान, नूर अहमद विल बी प्रॉब्ली अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर विराट कोहली, बिकॉज उनको स्ट्रगल हो चुका है लेफ्ट आर्मर्स के साथ. you've got काफी जबरदस्त फजल हक फारूकी हैं. तो दे नो हाउ टू प्ले इन इंडियन कंडीशन. आईपीएल हर एक बंदा ऑलमोस्ट खेलने वाला है या खेल चुका है. सो या, इट्स गोना बी अ टफ चैलेंज फॉर इंडिया. आई मीन ये बहुत अच्छी टीम है, जैसे आप बोली T20 में उन लोग बहुत अच्छे हैं, और ये कंडीशन उन लोग को पसंद है. अब डिपेंड्स, अब वो फ्लैट विकेट दिए तो नहीं होगा, मगर अगर बट नाउ दे शोन की बैटिंग इज आल्सो इंप्रूव्ड. दैट्स वन थिंग दैट आई वांटेड टू इंक्लूड, कि उन लोग की बैटिंग, आप गुरबाज के बारे में बात करो, आप जरदान के बारे में बात करो, हजरतुल्लाह ज़ज़ई, वी डिडंट सी हिम इन द 50 ओवर, राइट, बट T20 इज अ वेरी गुड प्लेयर. मैं उसको लाइव देख चुका हूं ने, भाई एग्रेसिव खेलता, ही इज अ गुड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एग्रेसिव. First we saw him in the Asia Cup also, right? Last time around, the T20 edition, not the 50 over one. Yeah. He's a very good player. Him and Gurbaz opening the batting, most likely it'll be really good. And then they have the likes of Kareem Jannat, Najibullah Zadran, Ibrahim. Yeah, these guys, their batting is improved. Bowling तो बहुत तगड़ी है. अब यही है कि डेथ ओवर्स में उन लोग कैसा डालेंगे, especially Fazal Haq and Naveen. I think in Indian conditions they understand playing IPL and stuff like that. Also West Indies, they can be effective. Like we said, West Indies, there can be conditions where it is conducive to spin, where it will turn, it'll be a bit slow. So I think Rashid, Mujib and these guys will be very dangerous. It's good to see Qais Ahmed also make a return to the team. But Noor Ahmed, तो by him and Rashid अगर दोनों खेल लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. But अभी तेजल भाई बोले Rashid Khan not available as he hasn't recovered from his surgery yet. अच्छा, he's not playing the so he's Pehla. not playing. I don't know what news. Oh yeah, I saw him in the gym recently, but I remember right after the World Cup he went for surgery. I think Australia में उन्हें surgery करा था. हाँ वही. But BPL से विड्रॉ करके न्यूज़ आया था, मेरे को वही याद है. But I don't know if he will play. Hopefully IPL तक उन्हें आ जाता है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक तो आ जाना चाहिए. बट स्पीडी रिकवरी, मगर उनके पास है स्पिनर यार. नबी है, और नबी भी है उनके पास. मिस्टर प्रेसिडेंट नबी अभी भी खेल रहा. हाँ, दिस इज लास्ट वर्ल्ड कप आई थिंक. आई थिंक इट इज लास्ट वर्ल्ड कप. So they've got a good squad. T20 में काफी तगड़े हैं. Good fighting attitude है इन लोगों के पास. And particularly जो जॉनथन ट्रॉट, जडेजा, ये लोग जो साथ पे मिलके चेंज करे. I was saying कि भाई 20 ओवर में जबरदस्त है, but 50 ओवर में भी अब चैलेंजिंग हो गए वो लोग. टेस्ट क्रिकेट being the last, because ज्यादा खेले नहीं. But with every tournament, with every bilateral improvement आप देख सकते हो. टेम्परामेंट पहले मैचेस में इमोशनल हो जाते थे, फेंक देते थे मैचेस, बट अब वही पाकिस्तान को हरा दिए, इंग्लैंड को हरा दिए. They've made a lot of progress from where they used to be. 100%. But this is going to be a good tournament. I mean, we've seen a lot of test cricket recently. 50 over, now it's finally I hope T20. it's good, man. I hope it's good, but T20 at least is fun. Jaldi khatam ho jata, wrap up. Then you've got 5 tests, man, from January 25th to March like 8th or something. So that's going to be a lot. मेरे को एक सवाल है आपके लिए. बोलिए सर. हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार फिट हो जाते हैं, फिर आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन निकलते दो प्लेयर? It should be ideally Rohit Sharma, Virat Kohli. वो तो वो नहीं हो that will सकता. happen? That can't happen because New York जा रहे, and you have a lot of marketing meetings that you need to. So I think if you think the that sad reality, and there's a sad reality, what I feel will happen if thing is Surya Kumar will replace Jaiswal, because Shubman Gill को नहीं निकाल सकते आप. And I think क्यों नहीं निकाल सकते? because like Shubman Gill, unless he very bad, but if based on performance, I mean, if Jaiswal plays better than him, then you can. Then either those two. Let's just keep Shubman and Jaiswal in the race, and then I think Hardik will probably replace Shivam Dube, Washington, like that. Someone. Shivam Dube will go.
Yeah. Are they? Yeah, I think Ibrahim is asking, do you see Rohit and Virat Kohli being the openers for the World Cup? I would like to see that, but अब दोनों को खिला रहे भाई, दोनों को ओपन कराओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और it should be fun, man. If they open the batting, it'll be fun. But and again, I don't know, if that is the right or wrong decision. But I think Hmm. with experienced players, they can make the most of the power play. They understand the game, and the opposition, if they both click, फिर the opposition will start having problems. अगर दोनों click कर दिए नहीं, तो and it's not like they don't know how to accelerate. They know how to accelerate also. उनको मालूम है power play कैसा use करना, new ball कैसा खेलना, and they can set the platform for then you can have your order a bit more flexible. आप तिलक वर्मा को भी promote कर सकते हैं, आप रिंकू भी कर सकते हैं, आप संजू को भी खिला सकते हैं one down. I think it'll be good. भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या प्लान है आपका? प्लान देखो, पहले तो वीजा मिलना। वीजा है यार, वीजा मुश्किल है यहाँ पे इंडिया में, बट मुस्तफा भाई का प्लान है। होपफुली दुआ करो कि आप मुस्तफा भाई इज अवेलेबल एट दैट टाइम एंड ही इज फिट एंड फैट नॉट फैट बट लाइक भाई इंडिया पाकिस्तान, हर वक्त यही मैच पे अटकती बात। yeah 100 they all need it man, अफगानिस्तान everybody पाकिस्तान का needs क्या प्लान है, वो ज्यादा yeah वो क्रेजी रहने वाला है, आई थिंक। बट हाँ, इंडिया पाकिस्तान, let's see how it goes, man. We'll always, me and Faiz are always looking to cover matches and everything, so we'll try our best and plan. मगर ऊपर वाला क्या हमारे लिए रखता वो देखना पड़ेगा, right? exactly कोशिश तो रहेंगी कि हम जाके cover करें, but of course we'll try. If not, then we'll cover from wherever we are. also the first game America Canada, Unmukh Chand is probably going to lead America. Is he going to be captain? Yeah, most probably Unmukh Chand might be the captain of America. Seriously? Yeah, I mean, most probably. अभी तो confirm नहीं, but it was the poster I saw Unmukh Chand facing Rohit Sharma, so it's going to be India versus India ऐसा बोल रहे थे, with Unmukh I Chand. didn't know that he will. And you also have new teams in the World Cup, Papua New Guinea, and you've got Papua New Oman, Guinea. yeah, Papua New Guinea, and you've got Oman. You've got who as Uganda, who knocked out Uganda, Zimbabwe. yeah. So it's going to be fun to see the guys. Oman is a very good team. I've followed them quite a bit. उन लोग अच्छी टीम है। कनाडा में 2-3 लोग को मैं पहचानता हूँ, पंटर भी पहचानता है, विनय भी पहचान, हर्ष ठक्कर है टीम में, साद बिन जफर है। Zaad bin Zafar is the one, he got, I think, a man of the match in the G20 when Chris Gayle was his captain. He's a good all-rounder. He can bowl left arm. Who are you going to support? Who? In Your- what? In the whole tournament, will it be Of India? course, or will it Canada. be- I'm Canadian, so of course we'll support Canada. We'll back the players. Nepal भी है. Nepal is also going to be there. It's going to be नेपाल fun. भी है। मेरे को ओमान भी पसंद है। I'm going to watch them Wow. very closely. मेरे को ओमान की टीम बहुत अच्छी लगती है। Like they've overtaken the likes of UAE and stuff, man. Like if you see, when we were growing up, UAE was always the associate team to come in and stuff. But Oman is taking over, and I'm very excited to see even Netherlands. Netherlands is a team who's done really well in the past. They did very good in the 50-over World Cup. So I have a keen eye on these teams. I think the associate games will be fun also. It's just sad they Close don't get encounters enough. Manavas. Huh? There should be close encounters, but that'd be fun. Yeah, it's just sad they don't play enough competitive cricket against the bigger teams, so it's going to be difficult. It's not fair. एकदम से वर्ल्ड कप पे आके अब कनाडा अमेरिका दोनों को फेंक दिया इंडिया पाकिस्तान के साथ. I don't know if you saw that reel where, like, Surya Kumar, Babar, KL Rahul, everybody's licking their lips with that. These guys are in their group. I don't think it's fair. Like, and ठीक है, उन लोगों को, they won't be complaining by they're playing against Virat Kohli, Babar. But if you remember the T20 World Cup, no, which World Cup? Where what World Cup before? Yeah, T20 World Cup 2022. ऑस्ट्रेलिया में जो था, जो Zimbabwe comeback करे थे, ऑस्ट्रेलिया में, right? Yeah, in Australia. So I think that you shouldn't like undermine anybody, and you never know कि भाई कोई भी हरा दे सकते. 2007 वर्ल्ड कप की आप बात करें थे, 50 ओवर की बांग्लादेश हरा दिए थे अपने कुछ अभी, so anything is possible. Ibrahim is asking, what are your thoughts on the Super 8s being predetermined by team seeding? The predetermined by team seeding, I don't think that's fair. I think that it should be, according to the seeding of the group. So basically, if India comes second in the group, they're still A1 because they have a higher seeding. If I'm not mistaken, that's what you're saying, right? If I have understood your question, that seeds don't change depending on your thing. It's already determined by your seeding from before the tournament. So if you come first or second, it doesn't matter. You're A1, A2. That doesn't change, which I don't think that is correct, but it's a minor thing. Again, kind of they need like India Pakistan. No,
इंडिया क्या है, पाकिस्तान का टॉप करी ग्रुप, राइट? They'll still be A2, they won't be A1, even though they should be A1 if they top the group. You understand what I'm saying? Yeah, that's one thing, but that's also like, हाँ अच्छा वैसा बोल रहे यार, नहीं, okay, लाइक that इंडिया makes more sense. पाकिस्तान Yeah, विल yeah, प्ले that, इन द ग्रुप, वो तो yeah, आप जो बोल रहे हो वो हाँ सही हाँ है, लेकिन हाँ, उसके बाद जो सीडिंग होंगी ऑलरेडी डिटरमिन्ड है. इट डजंट मैटर हु कम्स फर्स्ट और सेकंड. So अच्छा, that India, that's so based, for yeah. example, India is going to play their games. Pakistan, let's assume they win their games. They play against each other. It doesn't matter who wins. Whoever tops the group, India will still be A1. Yeah, that doesn't make sense because ideally the first team will become Pakistan and like they should have been Yeah, it there. shouldn't Yeah, be pre-seeded. So I don't agree with yeah, that Joe Ibrahim makeup question. Like, that's my thoughts on the predetermined thing. yeah. Tickets तो अभी सेल पे आए नहीं, so अभी तो time है. I think it'll probably start from the IPL or something. But seeding rule is dropped बोल रहे थे just by, I don't know if uh I don't have any information on that, but maybe if it's dropped then it's Yesterday good. when I checked, the rule applied. Maybe they changed it today. I don't know. Yes, India remains A1, so the potential Super 8 is India, Australia, New Zealand, Sri Lanka, and the other Yeah, so boys. that's what I've been saying because they want an India Pakistan at any cost, right? So इधर से आओ, not the नहीं, group मगर वाला बोल तुम रहा हूँ, ये नहीं group वाला समझ आगे रहे. वाला बोल रहा नहीं, आप ये देखो इधर, वो तो ठीक है. आप हूँ. ये देखो, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, राइट? दैट इज अ ग्रुप व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग प्रीडिटरमिन्ड बिकॉज़ दे आर A1 A2. समझ रहे हैं आप मेरी बात? Oh, okay, वैसा They बोल should रहे हो, okay, they okay, should okay. be flexible. It shouldn't be India, Australia, New Zealand, Sri Lanka. Why should it be like that? But if they both qualify, it will be that because they are given the seeding of A1. But it should be like, why do they get a specific? They should get the group according to their position in the group. They shouldn't. Yeah, It should be according to like your seeding, in my opinion, yeah, right? yeah, yeah, yeah. That makes sense. England also going to be fun to watch. Hopefully, they get their basketball rectified soon. Basketball Uh, doesn't exist in this format, but yeah, I uh, mean, whatever their format is, वही usual format. उनका वो, like I think I agree with you. They're a solid team, man. I'll never take them lightly. जो भी conditions है उन लोगों को कभी lightly नहीं लेना. They're good in this format. They play high risk. Last time they lost to Ireland also, and they still won the World Cup. It'll be Yeah. fun to watch. And West Indies also can't be taken lightly, in my Yeah, opinion. वो West Indies को तो नहीं ले सकते because they've got Puran, they've got Myers, they've got a lot of players that are ready for the World Cup. But again, like you can't actually take anybody out of the course. कौन कब shock कर दे. Netherlands also, like we saw, impressive हो गए थे towards the end of the World Cup. They won a couple of games, and they were good in the power play में. वो उनका एक bowler नाम याद नहीं आ रहा, but he was picking up quite early wickets, so it was good to see that as well. Yeah. पाकिस्तान का देखना पड़ेगा, क्या मुद्दा रहेगा पाकिस्तान का जब तक उनके बॉलर आते नहीं आते. पिच कैसा प्ले करेंगे? अमेरिका में तो वो ड्रॉप पिचेस रहेंगे, क्या है वो जो भी ड्रॉप इन पिचेस रहेंगे, तो उसमें कैसा रिएक्ट करेंगे, बॉल क्या होगा वो बोल भी नहीं सकते अपन. लाते लाते टूट गया पिच तो बोल भी लाइक क्रैक वैक हो गया कुछ. ये पाकिस्तान का बेस्ट फॉर्मेट है T20. या तो अफगानिस्तान पाकिस्तान मजा आएगा. They've reached one semi-final. They've reached one final in the last 2 World Cups. तो इन लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है. 4 ओवर डालना उन लोगों के फास्ट बॉलर्स के लिए वो कंफर्टेबल है, इज मोर सूटेड. तो आई थिंक दे विल बी अ डेंजरस टीम इन दिस वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से. ये लाइक इफ माय इंडिया 11 फॉर द वर्ल्ड कप would probably be Jaiswal and opener with what's this guy, man? Gaikwad. Oh, that's a good pick. And then Shubman Gill 1 down. No, yeah, Shubman Gill 1 down, Surya Kumar 2 down, 3 down Sanju Samson, and then Rinku Singh, and you add everyone. I would keep Sanju Samson captain for the World Cup. I see a lot of sense in that, but a lot of people would not see because we know Sanju is a very good captain. Rajasthan Royals could lead kara. I know the last season was particularly weird for them, but they still had an outside chance. No, imagine आप ऐसे बंदी को दे रहे, like he had the worst year. Usually वो ट्रॉफी के साथ करते हैं, वो जो भी सबसे नया प्लेयर रहता है उसको ट्रॉफी थमा देते हैं. इसको दे दो कप्तानी. आप कैप्टेंसी दे दे रहे आप, तो आपका दिल दरिया है, बट आई डोंट थिंक इंडिया मैनेजमेंट का वैसा सीन है अभी. मगर ये कैसा है मालूम, मैं आपको एक चीज बोलूं, ये जो सिचुएशन है, अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा इंक्लूडेड नहीं है, आप बोलेंगे हाउ कैन यू नॉट इंक्लूड देम if you lose. यहाँ पे now they're included, and if they lose, they'll say, why didn't you go to the younger generation? So this is a lose-lose situation. You can't win with the Indian public. You cannot win in this. मगर पहले से हमारे को मालूम, मेरा जो है, I would always go with youngster. I'm saying even if you lose, right? Yeah, because आपको ऑलरेडी देखो कितने वर्ल्ड कप्स खेल लिए दोनों, रोहित शर्मा विराट कोहली. 2011 विराट कोहली खेला, रोहित शर्मा 2007 रोहित शर्मा खेला, विराट कोहली ने खेला. 2009-10 जो भी T20 के वो, फिर 50 ओवर का 11 अगेन रोहित शर्मा ने, 15 दोनों खेले, 19 दोनों खेले,
उसके 17 वो चैंपियंस बीच ट्रॉफी में जो खेले, था 17 14 16 चैंपियंस, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी खेले, 16 में आप फिर T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेले। सो 14 आपको काफी चांसेस मिल गए जहाँ पे आप एक्सपीरियंस, बट इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा ये रहेगा एक्सपीरियंस बंदों का। अभी अश्विन की भी जरूरत नहीं थी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, नहीं एक थी। मैच नहीं थी, ऊपर बंदा गया फ्री में, साउथ अफ्रीका भी जाके फ्री में, यूजलेस मैन, आई डोंट नो। या तो आई ये चीज आप कभी भी इंडिया में था बोला ऐसा लूज लूज सिचुएशन, जीते तो ओ हो क्या कर दिए, हारे तो या अरे भाई आप इन लोगों के साथ, तो दे ऑलवेज हैव अ नैरेटिव वेयर दे कैन फाइंड मगर एन ये एस्केप ए- राउट। एक ये एक चीज है। आई एम नॉट ट्राइंग टू सजेस्ट दैट दिस हैपेंड, बट ये एक चीज है कि अगर विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं थे स्क्वाड में, ये ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सर का बहुत इशू हो सकता था। दे वुड हैव बीन वेरी अनसैटिस्फाइड। आई एम नॉट बट सेइंग ब्रॉडकास्टर हिमसेल्फ शुभमन गिल की फोटो डाल देता, मतलब एड्स दैट वर कमिंग इन इंडिया, शुभमन या गिल वाज द फ्रंट पेज ऑफ द विद कैप्टन थिंग अफगानिस्तान। विद अफगानिस्तान, या Yeah, no, I understand that they might have had some information. I don't know what, but I'm just saying that if they didn't go to the World Cup, I'm not talking about this game. हाँ अच्छा, if रोहित शर्मा विराट कोहली डोंट गो टू द वर्ल्ड कप, स्टिल Yeah, हैवंट it गॉन। is a big loss for the broadcaster and the organizer आधी and इंडियन everybody. पब्लिक नहीं देखेंगे भाई, सो जाती है आधी इंडियन पब्लिक। Yeah, like ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाती है। Yeah, like it's a big. You're selling advertisements on Virat Kohli and Rohit Sharma देखो basically. अब आशीष मुझको तो देखेगा नहीं, आशीष तो देखेगा नहीं 3 बजे और का। अमेरिका की भी पब्लिक विराट कोहली आ रहा, इवन गोरे भी या आके हंड्रेड देखेंगे। परसेंट They या know who Virat Kohli ध्रुव is. भाई को देखो ना, अभी यहाँ पे वीजा का पूछ दे रहा है अभी से, कहीं को तो विराट कोहली है। आई थिंक उन्होंने है तो कहीं वेगस में, इसलिए पूछ रहे हो उन्होंने। ही इज ऑलरेडी देयर Who इन will win the अमेरिका match भी पूछ समवेयर। दे रहा हूँ। Who will win the match भाई, बेस्ड ऑन दिस इंडियन टीम कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। वो आपको बताऊंगा मैं एक मैच के बाद, या एक दो दिन पहले बोल देंगे आपको कि वो हम स्क्वाड से बता। भी इतना दूर है, आईपीएल है, वो चीज़ें हैं, अभी आने को पीएसएल, आईपीएल, वी डोंट नो द उतना नहीं इंजरी है, मगर स्ट्रक्चर। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये सब, एंड वी विल हैव द वर्ल्ड कप वेरी क्विकली अगेन, अनदर वर्ल्ड कप ऑन द कार्ड्स। दिस या इज गोइंग टू बी आवर थर्ड वर्ल्ड कप, चेजिंग द टारगेट, एंड वी जस्ट 1 year old। ये या थर्ड वर्ल्ड कप T20 रहेगा वर्ल्ड ये। कप 2022, या या वर्ल्ड कप 23, and then this and then already another champions trophy in हम लोग एक ही that। साल जिंदा है, और एक ही साल में ये तीसरा वर्ल्ड कप आने वाला है। 1.5 साल हाँ, पकड़ लो आप बाय और द टाइम दूसरा दिस। आईपीएल, दूसरा आईपीएल, ये दूसरा आईपीएल है, तो लाइक बहुत जल्दी जा रहा टाइम। बहुत सारा चीज़ जा रहा है यार, बहुत जल्दी जा अभी रहा है अभी टाइम, आप एंड देखेंगे, मेरे को यही देखना कि बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, बॉलिंग कैसा रहेगा, रोहित की कप्तानी कैसी रहेगी, हाउ इज द केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स इटसेल्फ, बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन it's रॉन्ग become आल्सो। like it looks like it become a Hardik squad versus a Rohit squad kind of a thing, maybe। Yeah, and we always thought, everyone thought it's a Kohli versus Rohit वो Sharma clash, but it looks like they're on the same side। जोश का पोस्टर पे एक रोहित शर्मा का फोटो डाल देना, एक हार्दिक का डाल देना, एक ऐसा और हम लोग कंट्रोल। समझते थे कि रोहित और कोहली का था, राइट? अभी तो उल्टा हो या गया, लाइक रोहित कोहली एक ही साइड पे दिख रहे हैं मेरे को तो। या नहीं, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली रोहित शर्मा इज फाइटिंग फॉर विराट कोहली, बिकॉज भाई बंदा मैच जिताया उनको, तो आई थिंक थोड़ी बहुत लॉयल्टी बढ़ गई, बट या स्टिल अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो सिलेक्ट नहीं हुए, अब उन पे भी सवाल आएगा बाद से, एज वी प्रोग्रेस थ्रू आईपीएल इज गोइंग टू बी द की मैन अगेन फॉर एवरीवन सिलेक्शन, एंड दैट्स व्हाट द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट इज। आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बेसिस पे आप इंटरनेशनल में घुस रहे नहीं घुस रहे, अब वैसा बोलता फिर डोमेस्टिक सर्किट में टेस्ट में कहीं को नहीं देखते ऐसा, जिस तरीके से आपके सरफराज हैं और कितने की प्लेयर्स उठ के आते, बट उनको चांस नहीं मिल रहा, but सो in this format I'm okay with it. Like in this format, like I'm बिकॉज okay with it because इट्स अ लाइक फॉर लाइक काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। yeah, no, don't get me wrong, that doesn't guarantee them to perform. Like for example, उन्हें अगर मार दिया 800 रन जायसवाल for example IPL में, he can still have an average of 2 in the World Cup, because it's a Yeah, completely and different we've competition. seen that in Yeah, the we've seen it, yeah. 2022 So World don't Cup। get me wrong in that, but I'm just saying, like, there's not much for T20. That is the only kind of indicator that you have, apart from but like test matches. You can say Ranchi Trophy, you can say Vijay Hazare. Over here, there is one domestic, Saeed Mustaq Ali. That's the Yeah, only thing, but it's not. But you would say the IPL is more competitive, right? Because you have international players. Then the Saeed yeah, Mustaq Ali. So then yeah, that is the indicator. I'm not really, but where your point comes valid is in particular with, you have like a certain team a guy who's playing international matches, for example यूसी चहल, आप उसको ड्रॉप करके चक्रवर्ती को ले लिया, आप जाके हार गए वर्ल्ड कप। That was yeah, a wrong decision. yeah, that was like That weird was a wrong decision. In hindsight, mystery it's spinner। easier for me to say it's a wrong decision, लेकिन अगर आप पहले भी देखो, Chahal का बनता था, and he didn't have a bad IPL. It's just that Chakravarti had a crazy IPL. They reached the final. Chahal still had a decent IPL, but what did you do? You switched him out, and You neglected the fact that Chahal is an international spinner। yeah, that is where you don't get carried away with हम्म, performances. But youngsters coming through, I have no problem with Jaiswal, बिल्कुल। Gaikwad. इन लोग तो नहीं हम नहीं, लोग यू नीड कौन दैट सा ऑल्सो मैन, कब तक आप ये रोहित और विराट का एरा चलाते रहेंगे, राइट।
कहीं ना कहीं तो खत्म दोनों अमेरिका में भी तो चाहिए। चलाएंगे, अभी तो चलने वाला है न्यू, अमेरिका they're में getting तो to रोहित की California. रोहित शर्मा एकेडमी भी खोला फ्लोरिडा या या कहीं, तो उसकी वहां पे टोपी भी जाके। वही पहनता है ना, एलए वाला, आई थिंक एलए वाला हाँ, वो वो तो बेस डॉजर्स का, आई थिंक द बेसबॉल Huh? टीम डॉजर्स, इजंट Yeah, दैट yeah, he दैट always टीम? wears that cap. या He's या excited to go to America, and ही must come I am डॉजर्स। actually waiting to see who is like now. I think I believe that Rohit Sharma will lead India in the World Cup. Now it's After going to seeing, be fun to see Hardik Pandya coming back, then what happens, that's yeah, also I one think more it'll thing be I'm waiting Rohit for। because ठीक है, you look मुंबई at Rohit इंडियंस Sharma's छीन लिया, ये भी perspective. छीन लिया, बोले टू मच हो जाएगा। आप रोहित शर्मा का पर्सपेक्टिव देख लो, उन्हें क्यों आएगा स्टैंड कैप्टन, अगर हार्दिक को बना रहे कैप्टन, उन्हें बोला होगा भैया मैं अभी कप्तानी, मैं अफगानिस्तान से खेल रहा हूं, अगर आप मेरे को टी20 वर्ल्ड कप का कप्तान बनाए मैं तो मैं क्यों करूं कप्तानी, आप किसी और को दे दो, या किसको दो, किसी को भी दे दो, तीन तीन मैच है इसमें क्या है, हार्दिक आके उन्हें कर लेगा फिर वर्ल्ड कप में, राइट? या हार्दिक नहीं है तो सूर्या भी है, दो प्लेयर में से एक तो कर लेगा, वन गाय विल बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप, दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग। तो अफगानिस्तान को किसी को भी दे दो, शुभन गिल को दे दो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन he has taken that captaincy saying I'm going to be leading the world cup, and there is something that happened, that's why it took so long. Why did it take so long for the मैं एंड फर्स्ट टाइम इतना ब्रेक डाउन करके लाइव, पहले फर्स्ट टाइम क्रिकेट इन्फो के 3 पोस्टें एक दिन में देखा मैंने, विराट कोहली, रोहित शर्मा नॉट इन द आर इन द स्क्वाड, एंड देन यू पुट इन द स्क्वाड, एंड देन यू पुट इन लाइक अदर थिंग, इट्स जस्ट ब्रेकिंग डाउन सो मच के क्या है कि इट या टुक अ मेरे लॉट। हिसाब से तो उन्हें कप्तान है, अनलेस उसको इंजरी हुई, रोहित शर्मा कैन आल्सो गेट इंजर्ड, इट्स नॉट लाइक ही कांट, या so if Rohit ऑफ Sharma कोर्स, gets injured then Hardik will lead the T20 World Cup, या इफ सूर्या बोथ आर कुमार। इंजर्ड you probably even see like someone else get things, which leads Now back you to tell me, if Surya, Hardik, Rohit, they're not there, then will Virat Kohli take the captaincy? he did take it in the IPL। Yeah, so that is another thing. लेकिन कुछ अगर भी हो सकता है, वो बंद दरवाजों में कुछ उन भी लोग चल रहा अगर है फिट आजकल। है तो उन लोग अगर फिट है तो रोहित रहेगा, नहीं तो कोई भी रह सकता मेरे हिसाब से, अगर सब फिट है तो रोहित शर्मा रहेगा कप्तान, अभी सब ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर केएल राहुल आके बन जा रहे थे। केएल राहुल को कप्तानी तो नहीं देंगे, उन्हें आ सकता टीम में, मगर कप्तानी तो नहीं देंगे मेरे हिसाब से, अनलेस एवरीबॉडी इज नॉट फिट, देन वही एंड कोहली सेज आई डोंट वांट टू कैप्टन, देन यू कैन गिव इट टू केएल। या क्या है होता कि आगे मालूम होता, बट फॉर नाउ रोहित शर्मा, विराट कोहली आर बैक इन द स्क्वाड, गोइंग टू बी व्हाट वी आर होपिंग फॉर इट टू बी, अच्छा खासा एक टूर्नामेंट, क्रिकेट 20 ओवर का देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फिर आपके 5 टेस्ट मैचेस है इंडिया में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो मजा आएगा, होपफुली इंग्लैंड ब्रिंग देयर ए गेम, baseball is able to play spin attack, hopefully, and you will probably see Ashwin again back in the mix of things, Jadeja back in the mix of things, Shreyas Iyer and all of these guys, but it'll be a good challenge, hopefully England bringing the best of the best ability, जो काफी टाइम से हम नहीं देखे आशीष के बाद से particularly। ये थर्सडे को शुरू हो रहा है, राइट? या ये 11 तारीख को फर्स्ट मैच है, सो थर्सडे को। मजा आएगा वो देखने में। थैंक यू एवरीबॉडी जो हमारे साथ जुड़े आज, आपके कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग, ध्रुव भाई थैंक यू फॉर जॉइनिंग, तेजस भाई एज यूजुअल, इब्राहिम भाई एज यूजुअल, everybody please like, subscribe, support the channel, thank you Mustafa, good night everybody and take care of yourselves, bye bye।